अनबिलीवेबल इनिशिएटिव और हर साल मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन में was the brand ambassador in fact, right? And I landed up there और हर साल राहुल मुझे वहाँ मिलता था with these young girls from Port Blair, and then he introduced me this time to the girls and boys from Kashmir, and I think it's absolutely outstanding that he's taken up such a big cause, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग कमिटमेंट ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम. This man has actually been so consistently इन्होंने डिलीवर किया है, and he's got out these young bright students. और मैं मिल चुका हूँ. I've met all of them, right? I've met each one of them. They're wonderful. I've seen Bindu and her friends grow up actually. मुझे पता है कि मैं नहीं, मेरे बाएं पे जो बैठे हैं इसके लिए आप आए हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी वेरी मच. जैसे आपने अभी सुना, शिलोंग चेंबर क्वायर 1 मार्च को हमारे फाउंडेशन के फंड रेजर में परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है. दूसरा हिस्सा है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो इनके साथ अभी आपने इनको सुना है, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकेंगे कि इफ़ उस्ताद जाकिर हुसैन प्लेज विद दिस क्वायर ए वर्ल्ड क्लास इवेंट. उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ the greatest tabla and percussion player in the world, and the Shillong Chamber Choir is one of the top 3 choirs in the world. हमने ये सोचा कि फाउंडेशन अक्सर हर साल एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग ऑक्शन किया करता था. This time we said forget about the sporting auction, let's just have a straight fundraiser. हम अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे आपको, हम क्या तालीम देते हैं उन बच्चों को, हमारा मकसद क्या है, लेकिन उस शाम को अगर रसीला बनाएं तो कैसे बनाएं. तो हमने सोचा कि अगर फाउंडेशन का मकसद ये है कि जो 2 भारत है, एक बहुत गरीब दूर दूर जगह पे, चाहे विदर्भ में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे अंडमान में हो, अगर हमारा मकसद है एक ब्रिज बनाना, एक पुल बनाना उनके बीच में, एंड द मोर फॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इंडिया, देन व्हाई कांट वी डू दैट इन म्यूजिक, where we build a bridge between 2 very very distant people and yet both world class. You know what, where it comes to social work, you can lose anything. I mean, honestly. And I think at the end of the day, when you get a call like this from Rahul, or when you get a call for any social work, I think films should be completely kept aside. When you've got a platform to do, and you've been given a platform to do work like this, I think it's very important to put that first. And I believe that. I always say this, and it's my standard line, credibility is more important than career. At the end of the day, if you're not a credible human being and you're great in your job and you're earning your crores and your millions, I don't think after you're done with everything you'd have the respect of too many people. So somewhere deep in my heart, I'm also selfish. I want those kids to love me also. Somewhere in my heart, I want to be known as, at least I'm living this dream of being known as a good human being, somewhere in my heart. So I really believe that a cause like this, you forget everything and you come. You're like a horse with blinkers. This is a job you're supposed to do. And I think that's what makes it special.